Electrolytic refining of copper. Electrolytic meaning electro means electricity का use करते हैं, lytic mean to break down. So in electrolytic refining of copper, basically the copper which we get from nature is maybe 97 to 98% pure. So which simply means that this is containing some sort of impurities. Impurities के कारण कॉपर की कंडक्टिविटी कम हो जाती है, इसीलिए जब इसे वायर बनाने के लिए या ऐसे कंडक्टिव पर्पस के लिए यूज करना है, सो इट्स रिफाइनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग? First of all, let us talk about CuSO4. CuSO4 solution is used as electrolyte. We are using two electrodes, anode that is made up of impure copper, cathode that is made up of pure copper. Anode is connected to the positive terminal and cathode is connected to the negative terminal. So by this the circuit is complete. Now what happens? When electricity passes through the solution, breakdown of CuSO4 happens. So electrolytic decomposition is happening, which means CuSO4 dissociates or breakdowns into Cu2 plus ion and SO4 2 minus ion. Cu2 plus ion is positive ion, that is cation, and we know C2C, which means cation will go to the cathode, and this is negative ion, which means anion will go to the anode. ठीक है? So what actually happens in this solution? What is happening? This impure copper the reaction is taking place in anode. So यहाँ से क्या है, पहले तो ions बनाने पड़ेंगे यहाँ पे, and we need lots of copper ions. So what will happen? ये जो anode है, this will start to break and release Cu2 plus ion. So after some time we will see that the width of anode is declining, ये कम हो रहा है, and it is releasing Cu2 plus ion towards the cathode. So it is releasing Cu2 plus ion towards the cathode, and since this copper ion is released, so what is going to happen? It will go towards the cathode, and so what is happening? It is going towards the cathode और ये यहाँ पे जाके जमने लगेगा, यहाँ पे ये डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा. सो आफ्टर सम टाइम हम देखेंगे कि जो कैथोड है वहाँ पे प्योर कॉपर था ऑलरेडी, और भी कॉपर जाके वहाँ पे जुड़ने लगता है या जमने लगता है, एंड धीरे 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 यहाँ से सारी इम्प्योरिटीज नीचे जा रही है. इम्प्योरिटीज नीचे जमा होते जाएगा इन द फॉर्म ऑफ स्लज, या फिर हम लोग इसको कह सकते हैं एनोड मड. जो भी गंदगी थी, जो भी इम्प्योरिटीज थी, वो यहाँ आ गया, और जितना भी प्योर कॉपर है वो आयंस के फॉर्म में यहाँ पे जाएगा, एंड यहाँ पे जाके क्या होगा, वो एटम फॉर्म में डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा. So basically what is happening at cathode? At cathode we had copper, and now we are going to get more copper ions. So basically the copper ions are going to join together and they form the copper atom, and this pure copper can be utilized for various further purpose. So how can we write the equations or the reactions that are taking place at anode and at cathode? So basically what is happening at anode? Anode से जो भी copper है that is breaking down into Cu2 plus 2 ions obviously, and यहाँ पे जो Cu2 plus ions बन रहे हैं ये हम लोग कह सकते हैं फर्निश हो रहे हैं. किसकी वजह से फर्निश हो रहे हैं? सल्फेट आयन का रोल है यहाँ पे. सल्फेट आयन हेल्प करता है ताकि और भी कॉपर आयंस बन सके. जैसे जैसे कॉपर आयंस एनोड पे बनेंगे, ये सेम कॉपर आयंस कहाँ पहुंच जाएंगे? ये कैथोड पे पहुंचेंगे. सो व्हाट इज हैपनिंग इन द कैथोड? ये जो आयन है इट इज हैविंग 2 प्लस आयंस, विच मीन्स कि इसने 2 डोनेट कर दिया ऑलरेडी. सो जो डोनेट कर दिया है इसीलिए आयन बना है.
सो व्हाट वी विल डू, हम यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन एड ऑन करेंगे तो ये वापस क्या बन जाएगा, कॉपर का एटम बन जाएगा। ये कॉपर कहाँ डिपॉजिट होना शुरू होता है, दिस स्टार्ट्स टू डिपॉजिट इन कैथोड एंड एज यू कैन सी cathode was already pure copper. So accumulation of more copper ions are happening here and hence we are getting refined copper that will have more conductivity. So this is electrolytic refining of